आज का हमारा मुजाहरा उस सिलसिले कड़ी है। हम लोग कोई फार्म हाउस बुक कराते हैं, शादी हाल बुक कराते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप है, 100-150 लोग आते हैं, ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद करते हैं, असले के जोर पे फायरिंग करते हैं, लूट मार करते हैं, रेप करते हैं, तशद्दुद करते हैं, चले जाते हैं। बाद में एफआईआर लॉन्च होती है, जमानतें उनको मिल जाती है। In 2021, it has become impossible to ignore the violence committed against the Khwaja Sira community. 10 trans women were murdered in the first 8 months of this year alone, while another was murdered this month. In September, an attack on activist Dr. Mohammed Moiz brought the existence of Bilas to the forefront of conversations on social media. Team Soch spoke to activists at a protest against Bilas, who are predominantly men that plan attacks on the Khwaja Sira community, terrorizing and enacting violence on this already vulnerable group without fear of consequence. There is an organized crime syndicate by the name of Bilas. वो हमला आवर होते हैं ख्वाजा सराओं के ऊपर भी, मूर्तों के ऊपर भी, फकीरों के ऊपर भी, और जिन्हों हम लोग effeminate boys या boys और men with a feminine soul, उनके ऊपर भी वो हमला आवर होते हैं। वो हमें अपनी ताकत का और अपनी हवस का और अपनी हिरस का निशाना बनाते हैं। We have been suffering at the hands of this violence for far too long. Now we are done being bystanders to our own violence. एक माफिया है जो गुंडे सिर्फ मर्दों के, वो गुंडे जो मूर्तों पे, ख्वाजा सरा औरतों पे अटैक करते हैं, उन्हें रेप, उन्हें कत्ल करते हैं, वो उन्हें बीला कहा जाता है, बीले। तो हम उसके खिलाफ कोई रियासत ने कानून साजी नहीं की भी, तो हम उसके खिलाफ, बीलों के खिलाफ कानून साजी के लिए और ख्वाजा सरा औरतों के ऊपर रवा रखे जाने तशद्दुद के मजम्मत करने के लिए आज यहाँ कराची प्रेस क्लब पे जमा हुई हैं सब। वो समझते हैं कि कोई बंदा किस चीज में था, ख्वाजा सराओं के बाल कटेंगे, वो ज़हनी दबाव में आएंगे, वो वही हरकत करते हैं। वो समझते हैं कि ये सबसे गरीब तबका है, मजलूम तबका है, इसको दबाओ, बदमाशी दिखाओ, अपना दिल खुश करो। Protesters put forward several demands, advocating for the social and institutional rights of the Khwaja Sira community. हमारी यही डिमांड्स हैं कि हमारा कत्ल जो कानून हमारे हवाले से मौजूद भी हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सिंध ट्रांस राइट्स बिल जो है वो अभी तक पास नहीं हुआ हुआ। इसी तरीके से जो है अपना ख्वाजा सराओं के हवाले से जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो हमारे पास सेफ हाउसेस नहीं है कि घरों से निकाल दिया जाता है, उसके अलावा रियासत भी हमें ओन नहीं करती, तो हमारे पास ऐसे शेल्टर, ऐसे सेफ हाउसेस मौजूद होने चाहिए जहाँ पे ख्वाजा सरा आराम से रह सकें और इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। उसके अलावा कोई ख्वाजा सरा कहीं पे भी होते हैं तो पुलिस भी उन्हें हिरासा करती है, हालांकि कानून मौजूद है, इसके बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं होता। और जो सिंध का बिल है, आज 6 साल होने के बावजूद पड़ा हुआ है, कभी उधर कभी उधर, वो क्यों नहीं पेश किया जाता? एक तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। नंबर 2, हम लोग चाहते हैं कि स्टेट मैकेनिज्म्स इंस्टीट्यूट करे जो कि ट्रांस स्पेसिफिक है, ख्वाजा सरा स्पेसिफिक है, हमारी लिव्ड रियलिटीज पे बेस्ड है, ना कि किसी वेस्टर्न लॉ का छापा मार के उसका उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है। एंड नंबर 3, we want national and provincial legislative representation. We need Khwaja Saras in the parliament. Since the September 19 attack on Dr. Moiz, the focus of the news cycle has switched to other issues, leaving behind the Khwaja Sira community and its plight. Members of the Khwaja Sira community ask that their allies continue the conversation about trans rights in order to keep the momentum going. I think one of the main thing is that you can educate people about trans rights. What are the do's and don'ts? आप Protection Act जो 2018 का है वो उठा के देख लें कि what are the rights and what are the rights that are actually being violated in the society. उससे I think सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो एक ally हैं और allies ने की नहीं है, allies होना चाहते हैं, start dialogues. And I think the best dialogues is like starting in your own circles, अपने घरों में, अपने friends में, अपने बहन भाइयों में बात करना शुरू करें। ये सवाल उठाएं कि क्या जो सोसाइटी में सलूक हो रहा है, क्या वो सही या गलत है। कि बात ये है कि हम जो हैं, हम लोग माशरे का वो तबका है जो के पास डिवाइन फेमिनिटी भी है, डिवाइन मैस्कुलिनिटी भी है, हमारे पास माशरे के और तारीख के सीक्रेट्स भी हैं, और हमारे पास फ्यूचर का विजन भी है। बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल पीपल, we are indigenous people, we are powerful people. It is not us who want rights from the other people. It is other people who need to look within. It is not us who needs to come out. It is other people who need to go in. So we are here with an invitation for the Pakistani public. We are not here to demand for our own rights. We are here to state that we will get them. Our message is, are you brave enough to look within and join us to fight for the struggle? Because we've been fighting and we've been winning for far too long. We do not know loss. The general Pakistani public does. Are you willing to let go of your ego and hold our hand and allow us to guide you to your spiritual and your political salvation?
Thank you.